Our intelligentsia is not very intelligent. वही टैंक, वही आर्टिलरी लॉन्ग रेंज, वही पुरानी चीज़ें. अरे यार, upgrade your air force. In real time we are still in the same second world war age. वो टैंक चला रहे हैं, वो आर्टिलरी लॉन्ग रेंज कर रहे हैं. क्या बात है. We cannot fight an intense war for more than 10 days, 10-15 days. Do you know that? आपके पास स्टैमिना नहीं है. राजनाथ सिंह, अगली बार हम कुछ और करेंगे. अरे भाई, अगली बार करते करते तो कुछ होता तो है नहीं. टिल अमेरिका और ट्रम्प जी, हम ये करने वाले हैं, साले यही करो, वॉक नहीं करना कुछ और. Why is Pakistan such a big thing today? Location. They have the location. हमें वो है नहीं. इतने हम डरे हुए हैं, डरपोक इतने हैं हम लोग, as a country, as a government. आदत हो गई. I remember Hamid Gul telling me, ISI chief, क्योंकि आप बुज़दिल हो, आपकी बुज़दिल कौम है. ये मत समझे कि we are the same people. No, they have changed now. The attitude has changed. They have fashioned themselves into a different people now. I must say, they're very I'm very impressed by the Pakistan military. रशिया को भगा दिया. Hamid Gul's greatest thing was precisely किसको भगाया? रशियंस को भगा दिया. हमारा कोई कुत्ता मर जाता है, वो पाकिस्तान ने किया. I mean, the point to make is we blame Pakistan for everything, which is a ridiculous thing. We trivialize the whole damn thing. They're very happy. वहाँ चाइना आपका ओपनली लूट रहा है. अमेरिका आपको ओपनली लूट रहा है और आपको पता ही नहीं. आप यहाँ वहाँ की बात. How do we don't have this? What do you expect the Indian Air Force to be flying on the night of 7th of May? You won't be flying. There's no need to fly. Didn't you see Sindoor? Didn't you? This is the problem. Our intelligentsia is not very intelligent. ना तो उनको कुछ समझ है on the defense matters. What was Sindoor about? Platforms don't matter anymore. The standoff weapons you fire matter. So we are still stuck in the traditional Second World War kind of thing. वही टैंक, वही आर्टिलरी लॉन्ग रेंज, वही पुरानी चीजें. अरे यार, upgrade your air force, upgrade your navy, upgrade your in the navy thing. I keep saying, don't compare yourself to any other country. You're a poor third-rate, fourth-grade country. You're a developing state. Your per capita income क्या है? What's your per capita income? So it's nothing. तो आप क्या? How are you comparing yourself to US? They can afford anything. I am a rich man. I can do whatever I want. What's the title of that film? कमाई पैसा, expenditure in rupees. क्या था वो? I'm not good with films, sir. I am not. I don't know either, but I thought it described our defense policy very well. आमदनी, अठन्नी खर्चा, रुपया, whatever. ऐसे ही हमारी नौबत आ गई है ना. पैसे तो है नहीं, and then you make the wrong choices. You waste your money. I mean, when I meet General Anil Chauhan and so on, वो अभी I said, General साहब, I mean, you have to be in the lead. Government को क्या पता? 36 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर. एंड अब वो ड्रोन वोन की बात कर रहे हैं, बट अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है ना. इन रियल टाइम वी आर स्टिल इन द सेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज. वो टैंक चला रहे हैं, वो आर्टिलरी लॉन्ग रेंज कर रहे हैं. क्या बात है. You should be very lucky that we are Pakistan is what you are considering as an adversary. So we should be very happy and lucky. I mean, if we go up against China, for God's sake, the army is nothing. By the way, I keep saying the PLA is crap. It's a shit force. But the technology they've invested, now they've become rich. They can afford their follies. You know how many the constellations, satellites, निगरानी रखते हैं आप पे? You know how many they have? 1,700 satellites. 1,700. या 4 जिसमें से. Oh, बाप रे बाप. और क्या, वैसे तो PLA कुछ नहीं है. हम put our regiment against that damn thing, they'll be beaten up black and blue. But that's not the kind of warfare that's going to be. So अब वो warfare के लिए हम तैयार तो है नहीं. इन्वेस्ट नहीं कर. थोड़ा यहाँ ड्रोन वोन की इतनी बात हो रही है तो यू हैव टू चीफ टू से कि भाई हम भी ड्रोन इसमें है. क्या ड्रोन इसमें? अबे टॉक अबाउट 5,000 drones. The other day,
Wasn't there a statement? Right, sir. 5,000 drones for formation. Okay, समझ लिए division strength formation. 5,000 drones क्या चीज होती है यार? इतनी तो सर मिसाइलें Ukraine, काफी ये they use 5,000 in a day. Do you know that? But we don't want to learn. हम तो भाई उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद. So where is the thing? Where do we don't learn? We don't have the resources. We have the resources, misuse them. Last 35 years में क्या किया आपने? आप ये capability बताइए that is world class. One, we cannot fight an intense war for more than 10 days, 10, 15 days. Do you know that? So this is a fact. These are truths. We don't like truth telling. That's a fact of life. We Sir. don't have the capacity. हमें stamina. We may have intention. We may want to fight until death. Okay. But that's your death. You don't have the resources. आपके पास stamina नहीं है. I said in Sindoor, why did we stop? राजनाथ सिंह अगली बार हम कुछ और करेंगे. अरे भाई अगली बार करते करते तो कुछ होता तो है नहीं. वो अगली बार की उम्मीद रखते हुए हम बैठे हुए. मोदी कॉल्ड अप ट्रम्प. ये हम कर रहे हैं, मानने नहीं जा रहे हैं उनको. टेररिस्ट कैंप्स पे हम अपना अटैक करने वाले. क्या जरूरत थी बताने उसको? तुम्हारे बाप लगते हैं? इज ये ओवरलॉर्ड? बस चाहे ना टिल अमेरिका और ट्रम्प जी हम ये करने वाले हैं. साले यही करो, बॉक नहीं करना कुछ और उसमें दम नहीं है आप में. Why is Pakistan such a big thing today? Location. They have the location. हमें वो है नहीं. And what does Rajiv Ghai say? Lieutenant General Rajiv Ghai, DMO? No, we accepted their offer of ceasefire, which you offered in 7, they didn't take it. But so Do you know what the Pakistani DGMO said? Jao. Why is Rajnath Singh now saying, अगली दफा करेंगे? Well, we said it a few days back. देखा आपने? क्या करेंगे? यही करेंगे ना जो करना था आपको. जो करना था आप करते नहीं हैं. और अगली टाइम का वो आप एंटिसिपेट करते हैं कि भी होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी. Opportunities don't come a begging. They're not repeated. In military terms in particular, you lose an opportunity, you lose it forever. ये नहीं कि वही अपॉर्चुनिटी आते फिर से आए. नेक्स्ट टाइम दुश्मन सचेत हो जाएगा वहां पे. कुछ नहीं है. We lost it. तो ये this should be the attitude ना. हमारे इतने हम डरे हुए हैं, डरपोक इतने हैं हम लोग, as a country, as a government. आदत हो गई. I remember Hamid Gul telling me, ISI chief, सब आजू बाजू में सब लोग तमाशा ही देख रहे हैं. And they were the elite in Islamabad. And he started talking. So I told him, generally we got down to the issue कि इतनी disparity है. आपका इतना छोटा वीक मुल्क है, आप क्या कंपेयर कर सकते हैं हमसे? Ultimately what he said? He said, जनाब आप सही कह रहे हैं, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते. अमित बिल्कुल सही है. उन्होंने ये कहेगा विल टेक ऑन ईच मुसलमान इज वर्थ 20. नॉट देयर. आपसे मुकाबला. एंड आई एम virtually quoting his words because it is imprinted in my mind, my memory. He said, जनाब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते. पर he says, taking the hard decisions, आप लेंगे नहीं. Whatever in Urdu that phrase was, he says, क्योंकि आप बुज़दिल हो, आपकी बुज़दिल कौम है. I say this to my military audiences. This is how they have measured you. ये मत समझे कि we are the same people. No, they have changed now. The attitude has changed. They have fashioned themselves into a different people now. I keep saying, no. They are much more bloody minded. Exactly the kind of stuff I'd wish India was. With so little, कैसे देखो कैसे अपना बना दिया इतने ईरान केस में. So the thing is, opportunity मिल गई. They exploited it. I mean, I remember one of the things that jokingly used to be said कि
we have a half hour edge. If there's a nuclear war, then we have a half hour edge because the decision in GHQ Rawalpindi, when it's made, we get to know it in half hour. A cabinet decision made here, they get to know about in 1 hour. So we have a half hour. India has a half hour edge. We have a half hour edge. So both, but they're very professional, I must say. I must say, they're very, very. I'm very impressed by the Pakistan military. They're very, very They professional. always cash on the nuisance value, right? Always. They know what the value is. I mean, you see, he's Field Marshal Munir is there in front of, he's sitting on the same table as Donald Trump. Yeah. And we are wondering what to do. You lost it, no? You don't have that. And this is after Iran has and Pakistan had skirmishes just a while back. Yeah. And they're firing. Yeah, I mean, at each other. they don't like each other. They don't like each other. And They don't, I they mean, have the equal treatment Yeah. of the ships going through Strait of Hormuz. Yes. And whereas, By the way, they have a free access for all their ships. You know that. exactly. We have on a case by case. They're Case by giving us free. We don't have to pay the $2 million per vessel. But it's अच्छा आज वो हमारे मिसाइलें दाग के भी हमसे बेटर टेबल पे है और हम दोस्ती का हाथ बढ़ा के भी but there are other things, no? Shared border, that makes a difference. Islamic, shared Islam religion, whether it's Shia Sunni doesn't matter. In the larger scheme of things, और शिया यहाँ भी है, पाकिस्तान में भी, जैसे इंडिया में है, तो वो सब है. These are counter. वो बेशक सौदेले भाई होंगे लेकिन भाई तो हैं. है और and they're close to China. China is helping Iran. See all that. वो भी it matters कि Pakistan दबाए media, just as it was for the US when Kissinger went to Beijing. Now they are there trying to make a So ये हर तरीके से हमेशा अपना फायदा उठा लेते हैं. है ना? अच्छी बात है. That's how they exploit their location. I keep saying, location, geography is the most important thing. इस्तेमाल भी करने की आपको होना चाहिए ना, वो टैक्ट होना चाहिए, दम होना चाहिए, वजह होनी चाहिए. विजडम होना चाहिए कि भी कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. बहुत बढ़िया सीख लिया उन्होंने कैसे करते हैं. है तो कुछ तुम्हारे पास है नहीं, पैसे हैं नहीं, पर वो कैसे IMF क्या सबको नचाते हैं. बेल भी मिलेगी, लोन भी मिलेगा. रशिया को भगा दिया. हामिद गुल ग्रेटेस्ट थिंग वाज प्रिसाइसली किसको भगाए, रशियंस को भगा दिया. वो कह रहा था आपके अगेंस्ट हम शुरू करेंगे. द पॉइंट टू मेक सिंपली इज वी डू नॉट what assets and resources we have, we don't use them well. The point I'm making. While the Pakistanis make a lot out of little. जो है उनके पास, उनको पता है हमारे भाई इतने ही है यार, ये ठीक से इस्तेमाल. और हमें परेशान करने के लिए बहुत है. हाँ, more than enough. उनके वो सिंगल माइंडेड है, यही है. लीड इंडिया उनको परेशान करो बस. और हम इजीली परेशान हो जाते हैं, तो वो और अच्छा है उनके लिए. और वो करते हैं कुछ नहीं है, वो पर हम परेशान हो जाते हैं. हमारा कोई कुत्ता मर जाता है, वो पाकिस्तान ने किया. I mean, the point to make is we blame Pakistan for everything, which is a ridiculous thing. You trivialize the whole damn thing. They're very happy. We are so paranoid about Pakistan. वहाँ चाइना आपका ओपनली लूट रहा है, How do we अमेरिका contain them, आपको sir? ओपनली लूट रहा है, और आपको पता ही नहीं, आप यहाँ वहाँ की बात करते रहते. You have to surprise the enemy. That's the whole point about Chinese Sun Tzu. Surprise, always surprise. Strategic surprise. Surprise the enemy. They always surprise everybody. Like उन्होंने गलवान में. और हमारा तो we are so predictable. We telegraph everything what we are going to do 3 miles ahead, 3 years ahead. हमारे Surprise किसी को है ही नहीं. डॉक्टरिंग मीडिया में पहले पता है जब आप पॉलिसी अंदर बनाने ड्राफ्ट कर रहे हो. वैसे ही. So this is the thing. We lack the basics of strategic policy making. The strategic mindset that you need to have. The basis of making strategic policies is absent in our policy making. सर जो है वो बहुत आगे चले गए ना मिलिट्री पावर में ऑलरेडी. नहीं, कुछ भी हो. वो भी बाई पार्टी It है. can't be an excuse, no? कितना आप I get that. 70 years आपके इंडिपेंडेंस हो गया है. आप you are still beholden to the West. कितना टाइम चाहिए आपको बदलने में?